हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल गिरीश नर्सिंग एजुकेशन पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आपको वेलकम करुँची कि आज आम डिस्कसन करवा जहाँकि आम 50 गोल्डन एमसीक्यू रही मोस्ट इम्पोर्टाट ठीक अच्छे। तो जोटा कि आम इम्पोर्टाट से एमसीक्यू मुझे सिलेक्ट करके नहीं आसती तो जमार भी स्किप करेंगे वीडियो। जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन रखते जहाँफल वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाइपर। समस्ते लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। आज आम डिस्कसन करवा आम जीआई लिवर एवं बिलियरी सिस्टम रो टॉप गोल्डन एमसीक्यू। तो लेट्स आम स्टार्ट करवा। नंबर वन क्वेश्चन जीवा कहला द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज ताको आम कौन कही था ना आमर इंजेक्शन propulsion digestion elimination and the correct answer is amara ingestion means kono ingestion which is food jaha ame process of food ame intake करूछि ताको कोन कहिता ame ना amara ingestion ठीक अछि। then कहला gall bladder is located gall bladder am कोठी located na upper right part of the abdomen epinephrine and insulin on the left side of liver and below the liver and the correct answer is amo below the liver तले किए आमर अच्छी प्रेजेंट आमर गल ब्लाडर टा प्रेजेंट अच्छी थाए। नंबर 3 क्वेश्चन द पैनक्रियास प्रोड्यूस व्हिच टू हार्मोन को हार्मोन आमर पैनक्रियास प्रोड्यूस करथाय ए रे कहला इंसुलिन ग्लूकागन एपिनेफ्रिन इंसुलिन मेलाटोनिन ग्लूकागन एपिनेफ्रिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंसुलिन एंड ग्लूकागन इंसुलिन एवं हमारा ग्लूकागन। तो ऑप्शन ए ही जीवा हमारा करेक्ट आंसर। नंबर 4 गो थ्रू द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैलिवरी ग्लैंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमान को भीतर कोटा हमारा सैलिवरी ग्लैंड रो करेक्ट स्टेटमेंट एहरे कहला पैरोटिड ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो द एक्सटर्नल acoustic mentus then कहला parotid sublingual and submandibular are the various type of salivary gland ना हमर parotid is the largest salivary gland and all the above कोन ए मान को सब ठीक parotid होची हमर कोन गोटे largest salivary gland एवं parotid gland कोठे हमर लोकेशन ना on each side of the face just below the external acoustic mentus एवं सैलिवरी ग्लैंड पार्ट है कौन पैराटॉइड सबलिंगुअल एवं सब मैंडिबुलर। तो करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 5 मिस्टर हरि वाज कंप्लेनिंग अबाउट द पेशेंट एट हिज राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन व्हिच रेफर टू ए रीजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन रे पेशेंट कंप्लेन पेन एब्डोमेन के आसी जहार पेन होची कौन को जगह रे नाम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ए रे कहला कौन रेफर कर ए हेड थोराक्स एब्डोमेन एंड अपर लिम्ब एंड द करेक्ट आंसर इज हमरो कौन ना हमरो एब्डोमेन। तो ऑप्शन सी ही जो हमरो करेक्ट आंसर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड करबा जेहेतु हमरो लॉन्ग अच्छी क्वेश्चन टा गोल्डन एमसीक्यू जमार भी स्किप करबेनी आपण माने खाता पेपर नोट रखि थांतु। सी रे कहला कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड कार्डियक स्फिंक्टर हम कोठी सिचुएटेड होता है ना हमारा हार्ट कार्डियम इन ऑफ द इसोफेगस इन ऑफ द स्टोमक कौन ना हमारा कार्डियक स्फिंक्टर व्हिच इज सिचुएटेड इन द इन ऑफ द हमारा इसोफेगस रो लास्ट एंडिंग पॉइंट रे हमर कोन थाए ना हमारा कार्डियक स्फिंक्टर ता हमारा प्रेजेंट थाए। देन कहला व्हिच ऑफ दिस पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इंस्टीट्यूट द gastrointestinal or alimentary tract ए रे कहला salivary gland gall bladder pancreas or anal canal and the correct answer is हमर कोन हमर anal canal। the serous membrane that lie the organ of the digestive system is called ताको हम कौन कही था ना
पेरिटोनियल peritoneum, visceral peritoneum, abdominal peritoneum or pelvic peritoneum. And the correct answer is our visceral peritoneum. So option B is the correct answer. Then question number 9. Which of the following structure hold the small intestine in position? को स्ट्रक्चर टा हमर स्मॉल इंटेस्टाइन को हमर होल्ड करथाय ना हमर मेसेंटरी मेसोकॉलन लेजर ओमेंटम ग्रेट ओमेंटम एंड द करेक्ट आंसर है हमर के हमर लेजर ओमेंटम होइती हमर कोन होल्ड करथाय स्मॉल इंटेस्टाइन को तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर कहला द बेसिक general layout of the gastrointestinal tract wall from inside to outside flowing the secretion. तो हम GI tract रो सीक्वेंस हिसाब से हमरो आउटर टू इनर सीक्वेंस हिसाब से कोटा अछि तो एरे कहला फास्ट अछि हमरो सबम्यूकस देन हमरो mucus then mucular then serosa submucous mucus এবং muscular then serosa okay then B रे अछि हमर कोन muscular serosa mucus and submucous. Then question number option C mucus submucous muscular serosa then D रे अछि serosa muscular submucous and mucosa and the correct answer is option C mucus submucous after that muscular then आसे हमरो serosa तो हमें कोन मन रखा MS ठीक अछि muscular सेरोसा एवं मस्कुला MSU MSE तो म्यूकोस सबम्यूकोसा मस्कुलर देन सेरोसा 11 the group of nerve is that is located into the sub mucosal layer to the regulate the secretory activity of the intestine is called ताको हम कोन कहिताउ ना हमरो मेनस प्लेक्स देन कहला ऑर्बेन्स प्लेक्स वेजिनल नर्व और सिंपैथेटिक नर्व एंड द करेक्ट आंसर इज हमरो मेसनस प्लेक्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिमुलेशन ऑफ द parasympathetic nerve on the digestive system result in हमर स्टिमुलेशन जेते बेले होय कोन को नर्व से हमर पैरासिम्पैथेटिक इन कोटे हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोन देखा जाय थाय ना डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी डिक्रीज डायलेशन ऑफ द पोर्टल वेन ब्रांचेस इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन और इंक्रीज टोन ऑफ anal sphincter and the correct answer is कोन होई जिवो ना इंक्रीज हमर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन ता हमर कोन इंक्रीज होई थाय इंक्रीज इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशन जीआई सिक्रेशन ता हमर कोन इंक्रीज हाई होई जिवो जिते बेले कोन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हला पर रे डाइजेस्टिव सिस्टम कोन देखा जाय ना हमर गैस्ट्रो जीआई सिस्टम सिक्रेशन ता हाई होई जाय then come to the next question the presence of amylase in the salivary serve the purpose of कहा purpose में ना हमरा washing away food particle to the clothes food particle to clean the mouth lubricant to the food to minimize friction with oral mucosal destroying harmful bacteria to prevent oral infection or next option देला हमर catalyzing the chemical reaction for the digestion of starch कोन ना सब बेले जेते बेले हमर कोन एमएलएस ता सालिवा सर्व करे कहा पर्पस रे हमर कोन
catalyzing the chemical reaction in the digestive or starch. Option D is the correct answer. The next question most important. The structure that is located near the laryngopharynx to the prevent a food bolus from the entering the airway during the deglutition the is the कौन जिते बेले आम किसी खाई था प्रिभेन्ट कर फूड पार्टिकल को बलस पाई एंटरिंग तो कौन कथा कहवा ना आम एपिग्लोटिस कौन हेल्प करता है जिते बेले आम जहाँ भी आम कौन इंजेक्शन करछे माने आम इनटेक करछे खाइले तो एपिग्लोटिस कौन करता है प्रिभेन्ट द फूड बलस टू द एंटरिंग एयरवे को से फूड पार्टी के न जावाई से कौन डेग्लुटेशन करता है किए नामर एपिग्लोटाइटिस. द चिप सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट चिप सेल गैस्ट्रिक कौन सिक्रेशन करते हैं ना आम पेस्ट्रिनोजेन देन अच्छी आमर कौन इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द करेक्ट आंसर इज आमर कौन नामर पेस्ट्रिनोजेन व्हिच इज सीक्रेट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस आमर कौन पेस्ट्रिनोजेन. Then come to the next question. The secretion and motility of the stomach can be stimulated by the hormone. को हार्मोन आम सिक्रेशन करते हैं मोटालिटी ऑफ द स्टोमक पे आमर सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइन गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक गैलेक्टाइनेज एंड द करेक्ट आंसर इज आमर ऑप्शन सी गैस्ट्रिन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Then question number 70. The surface area of absorption in the surface area for absorption in enlarged by the following structure of the small intestine. कहा को छाड़ी की नामर क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन प्लिकेस सर्कुलरिस भेलियस और माइक्रोफिलियस एंड द करेक्ट आंसर इज आमर कौन क्रिप्टस और लैब्रिकुन. ऑप्शन ए ही आमर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच टाइप ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटालिटी थ्रू द मिक्स ऑफ द टाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन नामर सेगमेंटेशन. ठीक है स्पीड जीवा बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी. द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट जॉइंट टू द रेक्टम ताको कौन कह जो पार्ट आमर रेक्टम को आमर जॉइंट होते लार्ज इंटेस्टाइन कौन कही आम नामर सिग्मॉइड कोलन. ठीक अच्छे ऑप्शन सिग्मॉइड कोलन. तो कौन है ऑप्शन डी ही जो करेक्ट आंसर. नंबर 20. डेफिकेशन रिफ्लेक्स आर सेट बाय कहा द्वारा ना द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द वॉल ऑफ द रेक्टम. ऑप्शन बी ही जो आमर करेक्ट आंसर. Then 21. The flow of pancreatic juice into the duodenum is controlled by the के कंट्रोल करते हैं नाम एम्पुल ऑफ द वेटर डक्ट ऑफ द वेसंग स्फिंक्टर ऑफ ओडी और पाइलोरिक एंटम एंड द करेक्ट आंसर इज आमर किए करते हैं नामर स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ऑप्शन सी ही जो करेक्ट आंसर आमर स्फिंक्टर ऑफ ओडी. द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन द कोठी देखा जाते हैं नामर बाइल कोठी सिंथेसिस है आमर लिवर रे. देन 23 बिलिरुबिन कंजुगेशन अकर इन बिलिरुबिन कंजुगेशन कोठी देखा जाते हैं ना लिवर ड्यूडेनम स्प्लीन और पैनक्रियास. द करेक्ट आंसर इज आमर कौन नामर एटा भी बिलिरुबिन कंजुगेशन मध्य देखा कोठी आमर लिवर रे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नटमेग लिवर सीन इन कोठी नटमेग लिवर आमर देखा जाता है नामर क्रोनिक
venous congestion liver. Option A is the correct answer. तो यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन एम्स रे आसला कि आमर क्वेश्चन आसला कौन नटमेग लिभर कौटी देखा जाए को केस रे ना आमर क्रोनिक भेनस कंजेशन लिभर. ऑप्शन A is the right answer. 25. One of the end product of carbohydrate digestion in the small intestine is ताको कौन कहबा आमे ऑप्शन सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज एवं फ्रुक्टोज कौन हो ऑप्शन होइछि हमर फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज कौन जिते बेले हमर प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन रे हमर कोठी है हमर स्मॉल इंटेस्टाइन ताको कौन कहबा हमर फ्रुक्टोज. Then 26. Which of these substance hydrolysis the dietary protein into the amino acid कौन नाम ट्रैक्सिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन 27. मोस्ट कॉमन एब्जॉर्प्शन फैट अकर इन कोठी देखा जाए हमर जेजुनम. जेजुनम रे हमर एब्जॉर्प्शन फैट हमर कौन अधिका परिमाण रे देखा को मिली थाए. देन 28 जीवा in the intestinal absorption the chylomicron A transferred to the lymph capillary of the bilious bag कोठे ना reverse osmosis facilitate transport active transport or passive diffusion and the correct answer is amar kona passive diffusion. Then question number 29. The main source of body fuel is carbohydrate, amino acid, protein, fat, and the correct answer is कौन आमर carbohydrate is the main source of the body fuel. जनता बाइक रे आमर कौन fuel नथिले गाड़ी चलेबने सेमिति main source होची आमर कौन आमर carbohydrate is the main source in the body. Then question number 30. 𝗥𝗲𝗽𝗲𝗀 is at risk of diuretic induced hypokalemia. Which of the following food that has the highest content of the potassium would be advised him to consume? को आम फूड रे पोटासियम टा आमर अधिक परिमाण देखा जाए चिकेन पोटाटो बनाना और सोयामिल कोठी पोटासियम बोले कौन आमर बनाना. Then next question, the rate of a reaction catalyzed by an enzyme will reach its optimum level in the human body when कैसे बेले देखा जाता है ना the enzyme is activated on the enzyme. तो ऑप्शन D is the correct answer. Then next question is 32. The energy exchange molecule that store and release energy as a required by the body is कौन नाम कौन एडिनोसाइन and triphosphate. The breakdown of the glycogen storage for more glucose occur in a biochemical process is called breakdown होचे हमर कोन ग्लाइकोजेन ताको कोन कहबे हमें नामरा ग्लाइकोनोलाइसिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन कहला नेक्स्ट दिबा लैक्टोज intolerance is an condition that occur become of the deficiency enzyme is known as ताको कोन कहबा लैक्टोज माल्टोज gluten pepsin and the correct answer is amar kona lactose. One of the key molecule in the metabolism of carbohydrate, protein and fat to produce energy output is कौन नाम pyruvic acid, citric acid, keto acid or fatty acid and the correct answer is amar kona pyruvic acid. Option A is the correct answer. Then next question कहला the catalytic reaction
of protein to produce energy ताको आम कौन कहबा protein to produce energy in the catalytic reaction रे से कौन transmission diminution beta oxidative phosphorylation and the correct answer is आमर कौन diminution. Then कहला order of using storage and energy source during the starvation is कौन नामरा ग्लाइकोजेन देन फैट देन आमरा skeletal protein. देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इन न्यूबॉर्न रो कैपेसिटी ऑफ स्टोमक केते हमरा ना 30 ml. लेंथ ऑफ द इसोफेगस इन एडल्ट केते प्रीवियस क्लास रे मध्ये कहितली लेंथ ऑफ इसोफेगस हम केते नामरा 25 cm. Then narrowest part of the esophagus is called narrow part of esophagus ताको हमें कौन कहिबा नामरा cryptopharynx. Option A is the correct answer. Narrow part of the esophagus ताको कौन हमें cryptopharyngeus. Esophagus enter through esophagus enter through का थ्रू एंटर होता है ना सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम along aortic opening muscular part of the diaphragm and right cross and the correct answer is आम कौन muscular part of diaphragm. Option C is the correct answer. Then 42 foot drip is caused by the damage to foot drip कहाँ पे डैमेज होता है ना हमारा डीप पेरिनियल नर्व. देन पाउच ऑफ डगलास इज बिटवीन क्या कारण कि नहीं हमारा रेक्टम एवं यूटेरस. mcqs diverticulum arise from foot नामरा इलियम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देन शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑफ ब्रांचेस ताको कौन कहबा हम स्प्लेनिक आर्टरी. portal vein is formed by the splenic vein and हमारा सुपरियर मेसेंटेरिक वेन. स्फिंक्टर ऑफ ओडी कंसिस्ट ऑफ हमारा 3 स्फिंक्टर ऑफ ओडी कितना स्फिंक्टर को नहीं गठित ना हमारा 3 स्फिंक्टर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स कौन आम नाम रेट्रोसियर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन 49 सुपरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू नाम पोर्टल वेन. देन लास्ट क्वेश्चन वेन ड्रेनिंग इनटू द पोर्टल वेन ऑल आर एक्सेप्ट क्या छाड़ी नाम रेनाल वेन बाकी सब वेन ड्रेनिंग पोर्टल वेन अंडर रे आसते हैं. स्प्लेनिक लेफ्ट गैस्ट्रिक सुपरियर मेसेंटेरिक वेन क्या छाड़ी आम रेनाल वेन को छाड़ी. आउटे मोस्ट इम्पोर्टेंट द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ के सब मन 1.5 मीटर.
Then the liver is kept in the position by ଆମର କୋଉ ପୋଜିସନ୍ ନା ହେପାଟିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରା ଆବଡୋମିନାଲ ପ୍ରେସର। ତ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ जो क्लास रे आपण जानवा जीआई सिस्टम रो इम्पोर्टेंट केते एमसीक्यू थिला। एटा हम टेलीग्राम ग्रुप रे मो पीडीएफ टा सेंड कर दी आपण देखिके पढ़ी पारिबे। नेक्स्ट क्लास रे मो आपण को नै आसीबे आउटे नवा टॉपिक ओबीजी ऊपर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। जय जगन्नाथ।